स्टूडेंट्स आज आम सेकेंड ईयर बही प्रथम चैप्टर आम आरंभ कर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो अच्छी भितर आम फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ह्यूमन रिप्रोडक्शन रे आज आम आरंभ करवा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम विषय रे जानिबा। यूनिटा सबुठु बेसी इम्पोर्टेंट सेकेंड ईयर पिला यूनिट रु मैक्सिमम क्वेश्चन हमर आसुची काउंसिल एग्जाम रे पिला माने यूनिट को यदि आम ध्यान देकी पढ़ा मैक्सिमम नंबर आम रखिपर। जुलोजी रे आम जानते 35 मार्क फुल सिलेबस फुल मार्क गुड़िक 35 मार्क रु बहुत परसेंटेज मार्क आम यूनिट रु आसुची। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ए वर्ष इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो आज आम स्टार्ट करवा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वी नो human or organisms which are dioecious. That means what are the dioecious? The sexes are separate. Human, in case of human, their sexes are separate. They are dioecious. Both male and female sex possesses a reproductive organ. Both male and female possesses reproductive organs, and we know about the reproductive system, male reproductive system and female reproductive system. A male reproductive system हो कि female reproductive system हो आगे तक आगे देखिबा what are the primary sex organs and what are the secondary sex organs. In case of human, the primary sex organs are in a male, that is testes, in female, that are ovary. You know about the testis and ovary. Testis is present in male and ovary is present in female. You know about the reproductive type. The reproductive type रे sexual reproduction and asexual reproduction. In case of human beings, sexual reproduction is occur. That means you know what are the features of sexual reproduction. Sexual reproduction. That means both male and female gametes are involved. Both male and female gametes are involved. That are in sexual reproduction. In asexual reproduction, single parent is involved. You know mitotic cell division and meiotic cell division. Like that method, it is asexual reproduction में कौन होची male gamete and female gamete रो union होची। इटा लगची common जिनिस है। Asexual reproduction में कौन होची that involves cell division. That are in case of asexual reproduction, in case of asexual reproduction from a single cell, it will from a single cell by the process of mitotic cell division, it will develop into two. But in sexual reproduction, both paternal and maternal, both sexes are involved. By the union of male and female gamete, a zygote will produce. In case of human beings, हमें firstly देखिबा the primary sex organ. Primary sex organ in case of male that is testis, and in case of female that is ovary. And जेतबेले आमे जिबा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कथा
These are non-reproductive gametes and sex hormones, but perform other important functions connected with the process of reproduction. ताले secondary sex organ गुड़ा करे कौन हुए? Those which do not produce gametes. हमारा एक को भीतर किए आसिले ना prostate gland, seminal vesicle, and vast difference penis in case of male, and in case of female, that means fallopian tube and uterus, vagina, mammary gland. These are the secondary sexual organs. That are the secondary sex organs. यदि हमें यही विषय कहले ताले हमें हेलो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन विषय ये हेलो तमर ए मध्य गोटे एक मारिकिया क्वेश्चन हेई पारे. What is the primary sex organ in male or in female? That is in male that is testis and in female that is ovary. आज हमें डिस्कशन करिबा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन. हमें यही जो कथाटी को देखिबा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Male reproductive system includes firstly scrotum, then testis, scrotum, then testis, then epididymis, then vas deferens, then ejaculatory ducts, penis, accessory glands. एक important points male reproductive system. पहले हमें first term हमें कौन कहते हैं? Scrotum. What is scrotum? Scrotum it is हमें जब कहवा it is suspended below the abdominal cavity. It is suspended below the abdominal cavity. It is a sac-like structure. It is a sac-like structure which is suspended below the abdominal cavity. It hangs outside between the two thighs rising from the root of the penis. Inside that scrotum, a pair of testes is present. Inside the scrotum, a pair of testes is present. पहले ए scrotal sac भितरे कौन रोचे? A pair of testes रोचे. बा दुईटी testes ए scrotal sac भितरे रोचे. स्क्रोटम का डिवाइड हेची सेति पे तमे जानो इट इज डिवाइडेड इनटू टू सैक ईच ऑफ द सैक contains one testis. Each of the sac contains one testis. That is the sac-like structure. Testis is present. এটা লাগতে আমি যদি কইবা testis is present inside the sac-like structure and
आम जब देखा यही सैक लाइक स्ट्रक्चरटा भितर कौन रोचे टेस्टिस रोचे पहले स्क्रोटम रिमेन कनेक्टेड विथ द abdomen or pelvic cavity by two inguinal canals on each side of the scrotal septum. ताले हमर ई टेस्टिस भितरे कोन रहउची ने स्क्रोटम भितरे रहउची टेस्टिस ताले टेस्टिस टी कोन हुए ने जेते बेले पिलाटी जन्म करा पूर्व पिलार पेट भितरे एब्डोमिनल कैविटी भितरे टेस्टिस टी थाए ये होला कोन हुए इट विल डिसेंड डाउन टू द स्क्रोटल sac through the inguinal canal. Through the inguinal canal, testis is descend down to the scrotal sac. On way, now at the timing, by the time of the baby is born, the testis move out of the abdominal cavity and descend into the scrotum. And descend into the scrotum. ताले कौन होची occasionally कौन हुए it fail to close occasionally it fail to close or fail to descend down occasionally कौन हो like it fail to descend down ताले कोठी रही गला ना abdominal cavity भीतर रही जीवो ताले ए abdominal cavity भीतर रही गले कौन हो ये गोटे प्रकार रो डिसऑर्डर होगा that is known as cryptochidism. ताको हमें कौन कहउछनी cryptochidism. Cryptochidism रे कौन हो ना टेस्टिस टी abdominal cavity भीतर रह जिवो that means they fail to descend down and remain in the abdominal cavity. That condition is called as cryptochidism. ताले यार लक्षण है कौन ये होची sexually mature हे परिवा नाही काहे कि abdominal cavity भीतर टेस्टिस रहिबा that is known as cryptochidism. ए कथा कि हमें देखला sometimes कोन होची the inguinal canal or inguinal cord जोटा inguinal canal का रहला fail to close after the testis have descended. बेले बेले कौन हुए ने टेस्टिस टी आसिला परे it failed to close after the testis have descend down after the testis is descend down or बेले बेले कौन हुए it will reopen or are reopened at the time at the latter stage causing an abnormality called as inguinal hernia. ताले inguinal hernia कौन हुए जेते बेले गोटिए पिलाटी जन्म होला परे टेस्टिस टी स्क्रोटल सैक भितर को आसिला किंतु इंग्यूनल कैनाल टी कौन हला ना बंद हला. इंग्यूनल कैनाल टी जदि बंद न हुए जदि बंद न हुए ताले कौन हम ताहले ए प्रकार जो डिसेबिलिटी ए प्रकार जो डिजीज टी हबो एटा को हम कहबा इंग्यूनल हार्निया. हम तो कौन से तौर पे कहउछन इट विल रीओपन और fail to close. Then that latter stage it causes an abnormality. That abnormality is known as inguinal hernia. In case of embryo, the testis is developed within the abdominal cavity. The testis is developed within the abdominal cavity, but after that it will move down or it will descend down to the
scrotal sac. Why it present in the scrotal sac? You know, the scrotum act as a thermoregulator. The scrotum act as a thermoregulator. Due to that, कौन होची 2 degree temperature, the it maintain the testes at a temperature of 2 degree lower than the body temperature. ताले हमर जेते जहाँ होची हमर body temperature जेति की रहउची ताले inside the scrotum 2 degree temperature ता होची कोन होची less होची, which जोटा की इफेक्ट पकाए the lifespan of the sperm. ताले lifespan of sperm ऊपर इफेक्ट हमने जानचंदी जे इंग्युनल कैनाल कथा हमें कहले, इंग्युनल कैनाल पर हमें कहले जे स्क्रोटम रो टेम्परेचर की केते ये करि परची, स्क्रोटम एक्ट एज ए थर्मोरेगुलेटर एंड से कोन करची 2 डिग्री टेम्परेचर को लेस करि परची बा ये रेगुलेट करची ये हला हमरो स्क्रोटम विषय टेस्टिस ताले हमें जो नेक्स्ट टर्म दिबा टेस्टिस हमें जानछे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भितरे फर्स्ट आसला स्क्रोटम, देन हमें आछंदी टेस्टिस. ए टेस्टिसटा कोठी रहला ना इनसाइड द स्क्रोटल सैक एंड टेस्टिस रो लेंथ केते ब्रेथ केते ई सब जानिबा. ताले फर्स्ट हमें जेतोल देखिबा टेस्टिस रो इन ह्यूमन द टेस्टिस रो measurement about length energy 4.5 centimeter, length 4.5 centimeter and 2 to 3 centimeter wide, 2 to 2.5 centimeter thickness, 10 to 15 gram in weight and volume is 15 to 25 ml. ताले हमें नेक्स्ट देखिबा ये होची हेड ऑफ द टेस्टिस, ये होची स्क्रोटल सैक, एटा होची स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक ये होची टेस्टिस. हमें गोटे टर्म वर्तमान इंपोर्टेंट टर्म हमें जानिबा गुबर्नाकुलम. कोन गुबर्नाकुलम? गुबर्नाकुलम कौन से विषय के जानिबा. गुबर्नाकुलम टेस्टिस इज ए fetal retropotential mesenchymal cord that extend between the caudal pole of the coital testis and the scrotum. ताले हमर गुबर्नाकुलम तार कंडीशन में हम कोन देखुले that extend between the caudal pole of the coital testis and the scrotum and guides the coital testis in the descent from the ventral surface of the kidney to its final position in the scrotum. ताले आमे ए गुबर्नाकुलम कथा जानिले. गुबर्नाकुलम is present at the between the caudal pole of the coital testis and the scrotum. आजी आमे टेस्टिस विषय एति की जानिबा. आउ नेक्स्ट वीडियो रे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस एवं ए लॉन्ग क्वेश्चन रो इपिडिडाइमस भास्ट डिफरेंस एवं accessory glands एवं ejaculatory duct, urethra, accessory glands, penis ए विषय रे हमें नेक्स्ट वीडियो रे पढ़िबा. वीडियो तुम केमिति लागिला पिला माने जणैबो. चैनल को सब्सक्राइब करो एवं ए वीडियो परवर्ती जारी रहिबो. वीडियो को देखिए.